Sir, please unmute the mic. Your voice is not able to. Your voice is not coming. Done, done. Can you hear me now? Yes, sir. Who is that? Unmute your video. Yes. Who is online? Just unmute your video. Okay. And Devansh. Okay, Devansh. Okay. If the connection is weak, you can go off video. Okay. Who has done homework and not brought the notebook? And also who has done the homework, you can raise your hand. So only how many? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. What about the rest? Why you not? What about online? Have you done homework? Done, sir. You've not done homework, Devan. Okay. Done, sir. You have done? Yes, sir. Okay. So how many questions you have done? Have you done 70? So at least, so our deal was like you have to do at least more than 50, right? So all of you, those who have completed homework, you've done more than 50 questions? Yes, sir. Okay. So just be honest with yourself, but next class, you must bring it without fail. Okay? Everybody, next class, how many number of questions it should be now? 70 plus 70, 140. Okay? Because the backlog continues. That's why you have to do only 10 questions per day. If you don't do it, if you miss it, it will carry forward. Okay? So maintain the average of doing 10 questions per day. So those who have brought the homework notebook, I will check in after some time. Right? Let us start the questions. Good morning. Okay, so what you start doing? All the chapters completed, you can start from the first chapter of physics. Okay? So you will actually discover what are your shortcomings, what are your weak areas. That we can discuss in the class. Now only one more chapter remains to be completed. Okay? So while I am coming, if you have any issues, you can discuss with me. Like I am showing up in case of regular lectures, once our portion is over, I won't be seen like this. So I'll be only available on demand. Okay? So you have only one more chapter one time when we'll be interacting. So complete your homework, as many questions as you can, so that I'm there to clear your doubts. That's the idea. Okay? Okay, let's start. Sir, I will now. In which question? Page number? Page number 77, question. Page number 77. Question number 14. 13. Okay. Sorry. 0. It's faster. Along the constant. Yeah. And the frequency. Yes. What is principal axis? It is convex mirror, right? Concave mirror. What is it? See, any point on the mirror that joins C is along the radius. Likewise, any point which is joining C is along the radius. Okay. Yes. Page number 87 question. Page number 87. So this is all. When you attempt homework, that's when you know where you need help. Okay? So those who have not done homework, 87.
Question number. Focus and optical center. Focus and center of question can also be. Focus and center of question can also be there. Are two options given? Yes. No, it's not. How we define focal length? The incident parallel rays, wherever they meet on the principal axis, they don't meet on center of curvature. The distance is same. No, distance, focus and center of curvature, the distance is same, but there are no two options, na? And Exactly. So, but they have not given multiple options. So, which one you will settle for? Both are correct. A and B both are correct. But you go with, I would say, focus and optical center. Because there should have been some option where A and B are given together. Which will take precedence? If you are choosing B, for example, then why not A? Right? So let us say if this is a question with multiple correct answers, then A and B both. Right? Everybody look at question 15. Focus and center of curvature of a lens is also equal to focal length. Yes, because it is twice. Right? So this will fall in the category of multiple correct answers. That question, it's not MCQ. Page number 64. Question number 14. One small box in the figure is equal to 1 centimeter. Mirror has a focal length of. Where is the small box in the figure? Ah, so there is no figure here, no? Yeah, so this is not complete question. The diagram is missing, right? So you can skip such question. There may be certain questions with incomplete data, right? Okay. So there may be question which may have insufficient data. Mark the question and leave that. Or maybe you can search it over net. You can search it over net, give the remaining question, search it over net, and see if there is some associated diagram. Okay, you can do that. Yes. The question 25, page number 88. Question 25, page number 88. Refractive index. Refractive index. Slope is constant, right? Slope is y by x. Okay. So straight line के लिए slope is constant. It is refractive index. Any more questions? 24. 24. 88. All of them measure the distance between the lens and the inverted image. This is what it is. Okay, so this is V. Ah. So all of them has views.
So it is a parallel race from a distant object. It's not parallel ray कहाँ पे होगा? Focus पे होगा. Marker is not having sufficient. Which question is this? This is question number 24. Page number silence. So if it is parallel rays, it will converge on at focus. Okay, now let's read the question. All of them measure the distance between the lens and the inverted image on the screen. Student A saw sharp image on the screen and labeled the distance as f1. Okay. Student B saw a slightly larger blurred image on the screen and labeled the distance as f2. Student C saw a slightly smaller blurred image and labeled the distance as f3. Okay. All right. So this is exact focal length. Okay. F1 has to be between in both cases the image will be blurred on either side. ठीक है. बड़ा कहाँ पे होगा? बड़ा इस तरफ होगा. ये वाला कौन सा है? So ये वाला F2 होगा तो ना ये साइड वाला F3 होगा. ये साइड में छोटा होगा. ठीक है. ये साइड में बड़ा होगा मेरे हिसाब से. तो क्या होना चाहिए आंसर? F1 is less than F2 and greater than F3. Yes, option C. Option C. ठीक है. ये होना चाहिए. ठीक है ना. As you go away, फोकस से दूर जाएगा तो इमेज बड़ा होते जाता है. नजदीक में आएगा तो यहाँ तक कम हो रहा है लेकिन ये छोटा ही होगा. लेकिन और पॉइंट साइज के बाद तो बनेगा ही. क्या चीज? पॉइंट साइज से कम का इमेज बनेगा ना. ब्लर बनेगा ना. हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में क्या होता है? तभी तो ब्लर होता है ना. When it is exactly focused, वहां पे शार्प इमेज है. उसके आगे पीछे दोनों तरफ ब्लरी होगी. ठीक है. Sir, question number 54. यस. प्रेस बायोपिया में दोनों नहीं दिखता है. एक्चुअली लेंस को जो ये एक्चुअली इट इज हाइपरमेट्रोपिया ऑफ द ओल्ड एज ऐसे बोलना चाहिए उसको. लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूजन है. तो प्रेस बायोपिया में द सिलियरी मसल बिकम्स इनइफेक्टिव. स्ट्रेंथ इज गॉन विद एज. ठीक है. तो वो उसको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता है. एग्जैक्ट पास का नहीं दिखना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द सिलियरी मसल इज यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग द लेंस. किसमें? दोनों जगह ब्लर दिखेगा. पास भी नहीं दिखेगा और दूर का भी. तो इसके लिए उसको बाइफोकल यूज करना पड़ेगा. ब्लाइंड नहीं. वो क्या होता है? द लेंस बिकम्स ओपेक. लेंस शुड बी ट्रांसपेरेंट. बट उसका विथ एज क्या हो जाता है? इट टर्न्स मिल्की एंड ओपेक. Cataract. So then it has to be basically with surgery it has to be removed. Okay. Yes, Ayush. Sir, question number 54. Question Page number page 54, 90. Okay, this is the last question. Okay. Page question 54. Okay. Let's check.
What you have is, you have one and three. Again, that one. This is medium A, B, C. Good A, कैसे हो सकते हैं इसके? The incident ray, refracted ray, and the emergent ray are in three medium. The emergent ray is parallel to the incident ray. Which of the following is true? तो ये तीनों में बेंडिंग होगी, ठीक है? अब इमर्जेंट वाला हो जाएगा, कैसे जुड़ जाना? ये डेंसर है, ये रेयर होना चाहिए, फिर ये डेंसर है, फिर ये रेयर होना चाहिए, मतलब ये डेंसर है, ये कम होना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। हाँ इसमें हो सकता है। ये देखो, अगर ये वाला डेंसर है N1 से, तो ये ऐसा है, और फिर ये कैसा हो गया? यस, इसमें पॉसिबल है, ठीक है? ये लेस है तो थोड़ा दूर जाएगा, मान लो इतना दूर जाता है, ये ट्रायल एरर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल। आई एम नॉट श्योर बट ऑप्शन सी वर्क्स। Sir, option D is the answer. हाँ, In the back answers it is. हाँ, तो ऑप्शन बी भी ट्राई करके देखो, ऐसे अभी तुम्हें आइडिया मिला ना, जहां ग्रेटर होगा वहां नॉर्मल की तरफ जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिखा रहा है? ऑप्शन बी कैसे हो गया? Sir, B नहीं D. हाँ, डी, ओके। तो अगर N1 और N ये 3 है, मतलब ये सीधे निकल जाएगा यहाँ से, मतलब ये कैसे आएगा मालूम है? अगर N1 इक्वल टू N2 है, तो ये ऐसे सीधा आएगा, फिर ये दोनों एक ही मीडियम हो गया, ठीक है? उसके बाद N3 इज लेस, मतलब ये क्या होगा फिर? नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है। देखो यही पैरेलल हो जाना चाहिए था अगर ये दोनों है, और ये क्या है? N3 इज लेस देन
मतलब ये डेंसर है, ओके। मतलब ये और ऐसे होगा ना, देख n1 इक्वल टू n3 है, तो इसमें डिविएशन नहीं होगा, ठीक है। और n2 क्या है, इससे लेस है, तो ये ऐसे होगा, यानी यहाँ पे रिलेशन ब्रेक हो गया, तो ये बाहर आके और ऐसे जाएंगे, तो पैरेलल कैसे होगा। ऑप्शन डी वाला मेरे को थोड़ा लॉजिकली गड़बड़ लग रहा है, मतलब सी और डी में से कोई भी एक हो सकता है, ए और बी तो नहीं होगा, ये ट्राई करके देखो, सी या डी में से कोई भी एक बन सकता है, ये दोनों सेम है तो डिवेट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है, सॉरी, n3 के लेस देन n2 है, तो इट विल गो अवे, इट विल गो अवे, बट अवे अगर जाएगा तो कितना अवे वी डोंट नो, और उसके बाद इसका और इसका, तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट आयुष। Yes, sir. ये देखो, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो चेक करके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, ठीक है। शैल वी गो अहेड, हम क्वेश्चंस ही कर रहे थे ना इलेक्ट्रिसिटी के। हाँ, कितने किए थे अभी तक हमने, वे वो भी पेज नंबर 123. 123, we were on page 123, which doubt, हाँ हो सकता है, मीडियम बदलेगा तो हो सकता है, फॉग में तो तुमको फॉग ही दिखेगा, फॉग कितना थिक है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, 123 पे हमने क्या किया था, इट्स फॉरवर्ड, वी वर डूइंग एग्जांपल्स Sir, और 122 से sorry. 11.11 एग्जाम्पल से स्टार्ट होगी. 11.11 से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जांपल 11.11, ठीक है, क्या है ये, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वोल्ट, रेट ऑफ एनर्जी इज पावर, ठीक है, तो गिवन E is equal to 840 watt. When heating is at the maximum rate and 360 watt when heating is at minimum rate, मतलब P1 ये हो गया तुम्हारा, P2 is equal to 360 watt. The voltage is 220 volt. So V is equal to 220 volt. So what are the current and resistance in each case? So you have to find current I1 R1 and I2 R2, ये निकालो दोनों केस, ठीक है। So what is the formula for power? I so P is equal to VI, ठीक है, तो देखो P1 is equal to VI1, V सेम ही है हर एक में, तो I1 कितना आ गया, P1 by V, मतलब 840 divided by 220,
So how much we are getting? This when you solve, you should get 3.82. Okay. अब R निकालने के लिए you can use Ohm's law. Right? What is R1 in this case? R is equal to like I1 R1 is equal to V by Ohm's law. This is by Ohm's law. Okay. So what do you get? This gives R1 is equal to V by R1, V by I1. V कितना है इसका? 20 divided by I1 we just found 3.82. So this question has some calculation. So the answer will be 57.60. 57.60. Okay, same you have to repeat for I2R. So what is constant here? It is the same device. Okay. It is the same device operating under two different modes. Same device operating under two different modes. So to do as many homeworks as we can, because we see the nature of questions. कितना homework किया नहीं किया तो छुट्टी क्या याद आप करेगा नहीं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क नोटबुक के साथ ही करना नहीं तो बाहर बैठ के होमवर्क करना च्युइंगम निकाल के किस्मत में लपेट देखना उसको लास्ट में बैठ के च्युइंगम चबाना हाँ तो ब्रेक खत्म हो गई भूल मत जाना कि मिल जाएगा बराबर के साथ जरा होमवर्क में क्या सीखे क्या है घर में मतलब ये करना जरूरी है इंप्रेशन मारने के लिए तो क्वेश्चन पूछ लेना बस काम भी करना है बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कंफ्यूजन है अभी कहीं कहीं पे क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है ये सब भी तुम देख लो ठीक है ये करने से ही मालूम पड़ेगा ऐसा नहीं क्यों तुम्हारा क्या सीखना attempting them is important and then ask doubts in class हमने कितने किए 60 तक किया तो ये जो का पहले ही बोला था ना एक बोला था होमवर्क के लिए कब बोला था लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास लास्ट टू लास्ट बोला लास्ट में बोला चलो ठीक है so by now I think everybody has got the message so unless you do homework तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितने टाइप के क्वेश्चन है ठीक है तुम्हारा क्या सीन है स्टार्ट नहीं किया अभी तक कब करोगी आज से करो ठीक है नेक्स्ट क्लास में सबका होमवर्क नोटबुक चाहिए मेरे को तुम ही लाए हो ना खाली नोटबुक तुम भी लाइए ठीक है तो 2 नोटबुक है आज देखूंगा नहीं मैं देखूंगा अभी आज देखूंगा सबमिट नहीं करना है और उसमें क्या करना है कैसे करना है देखो लिसन एवरीवन होमवर्क कैसे करना है डेट वाइज आज के 10 क्वेश्चन का डेट ठीक है और जो पेज पे होमवर्क कर रहे हो उस पे वॉल्यूम का पेज नंबर भी लिखो टॉप पे डेट एंड पेज नंबर क्या क्या लिखना है डेट एंड पेज नंबर सो दैट लेटर ऑन व्हेन यू रेफर बैक इट विल सेव टाइम ठीक है ये 2 चीज करना है डेट वाइज होमवर्क चाहिए 10-10 क्वेश्चन के तो ये नहीं चलेगा कि एक दिन मिस कर दिया तो अगले दिन या 3 दिन की बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है हर डेट का 10-10 क्वेश्चन होना चाहिए ठीक है run it for few weeks and then
it will be good for you in the end. You'll realize that. हर दिन 10 करते जाओ, एक हफ्ते बाद 70, 2 हफ्ते बाद 150, तो your familiarity will increase that much. And solve if there are too many doubts, like in other classes I saw, सब बच्चे हर क्वेश्चन ही ऐसे डाउट हो गया, एक का पहला डाउट है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, मतलब पूरा होमवर्क मैं कर रहा हूँ फिर क्लास में, ऐसे नहीं चले. ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ डाउट सॉल्विंग विल टेक प्लेस. ऐसा नहीं है कि तुमको सब क्वेश्चन, सबने गैंग बना ली, आपस में बातचीत हो गई, अलग अलग क्वेश्चन सर से ही होमवर्क करा रहे हो क्लास में, ये नहीं चलेगा. ठीक है, तो जिसके कॉमन डाउट्स आने चाहिए, कोई एक ही क्वेश्चन होगा जो सबसे नहीं आ रहा हो, वैसे क्वेश्चन लेंगे. बात समझ में आ गई? इफ रिक्वायर्ड यू मेक अ ग्रुप, तुम लोगों का आपस में डिस्कस करो पहले. कभी कभी क्या होता है, अलग अलग आंसर्स आते हैं. ठीक है, तो पहले आपस में पीयर डिस्कशन करो. सो मेक सम स्टडी बडीज. ठीक है, वैसे करके आपस में पहले सॉल्व करो डाउट्स. फिर जो कॉमन क्वेश्चन है, जो किसी से नहीं हो रहा, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे. विल सी वेदर समथिंग इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन. सो जो गॉसिप करते हो वो छोड़ के, यू कैन यूज द टाइम कंस्ट्रक्टिवली. देयर इज टेक्नोलॉजी, यू डोंट नीड टू बी फिजिकली क्लोज टू यू. हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप विथ योर फेवरेट फ्रेंड्स. यहाँ गप्पे मारते हो तो उससे अच्छा उसमें मारो, डिस्कस करो क्वेश्चन, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, फिर से हुआ क्या. यूज द टेक्नोलॉजी इन अ राइट वे. तो अगर 100 क्वेश्चन है तो डिवाइड कर लो, 4 जन है, 25-25 करो. मैं ये 25 कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फटाक से हो गया. आपस में डिस्कस कर लो. थिंक ऑफ अ वे. ठीक है ना, तो जल्दी हो जाएगा. 3-4 मिलके एक एक ग्रुप में, मल्टीपल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म. जिसको जैसे सूट होता है वैसे करो. जिसको अकेले करना है वो अकेले भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं. वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, यू डिवाइस फॉर योरसेल्फ. जस्ट गिविंग यू आइडियाज. ओके, सेकंड वाला पार्ट भी सिमिलर है. ओके, आई एम लीविंग दैट फॉर यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11.12. What is the next question? An electric bulb is connected to 220-volt generator. So in this also given V is equal to 220 volt. Current is 0.50. What is the power of the bulb? So it's the same. P is equal to VI. VI. P is equal to VI. So straightforward. 220. कितना हो गया ये? 5. 5 to the 10. 5 to the 10 plus. Yeah, so this was straightforward. Next. Next is example 11.13. So what is given here? An electric refrigerator rated 400 watt. P is equal to 400 watt. Operates 8 hours a day. What is the cost of energy to operate on 30 days? So 30 days में hours कितना हो गया? 8 into 30 hours. Okay. And what is the cost of energy? Cost of energy cost. Rupees per kilowatt. So how do we do this? Our energy cost is given rupees 3 per kilowatt hour.
For 30 days, first we find out how much energy is consumed. How much energy is consumed? So for kilowatt, convert it into 8.8 hours. First convert power into kilowatt. So this will be how much? 0.4 kilowatt. The energy E is equal to P into T. Energy is power into time. So what is it? 0.4 kilowatt into 8 into 30 hour. 12. 12 8. How much is 12 8? 8 into 30 hour हुआ ना? एक दिन में कितना है? 8 hours. तो 30 days में कितना हो गया? So how much is 12 into 96? 96 kilowatt hour. So what is the energy consumed? 96 kilowatt hour. So what is the cost of energy? 288. 3 into 96, which is rupees 280. ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो इसमें you have to first calculate the power. Power should be converted into kilowatt, and then total time in hours. So when you multiply, you get total number of kilowatt hour, because the energy rate is always given per kilowatt hour. So once you know how much of kilowatt hour you have consumed, then the cost can be calculated directly. Okay. Okay. So now, what questions do we do? We have done NCERT in-text questions completely. Huh? So we will do. Let's do NCERT book exercises first. Shall we do application based? There are no review. Classwork review नहीं है क्या इसके अंदर? Okay, let's do application based. ठीक है? Page number 126. इसके आंसर दिए हुए हैं? 130, 139. Okay, let's do classwork theory first, then we will go to application later on. Come to page number 139. Classwork theory तो हमने किया होगा. Don't you have classwork exercise? These are 34 questions. It's a long one. Okay. Let's very quickly run through classwork theory. So these are very short answers. First question: what do the following symbol represent? You just raise your hand. Okay. What do the following symbol represent? A. Which register? Page number 139. 139. Classwork theory. Look here. Question 1A. Fixed register. It is fixed register. B.
C. Cell. Cell or battery? Usually cell. 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 Yes. Question 2. A. Which of them represents a metal? A. Why? A. Why? Because the graph of AI shows that it's constant, sir, constant. Yes. Yes. Very good. Because Ohm's law is shown. Ohm's law. Ohm's law. Okay. Ohm's law. Ohm's law shows direct proportionality. Straight line means direct proportionality, which is Ohm's law. Okay. Everybody stay tuned, otherwise you're going to miss the answer. What you have to write here? Which of them represents a metal? Answer is A, because only for A, B is directly proportional to I. Okay? Only for A, B is directly proportional to I due to straight line. Define power and watt. So power is Newton per unit time. And watt? Unit of power. What is the unit of power? 1 watt of power is said to be generated when 1 joule of work is Ah. done in one. When 1 joule of work is done every second, Sir, that is 1 watt. that is one system. What 1 watt means? 1 watt. 1 watt means 1 joule per second. Simple. 1 watt equal to joule per second. Okay? What is the unit of power? उसमें दोनों को डिफाइन करना है. Define power as well as define watt. ठीक है? Next. Okay, identify true and false. First, Sir, false. Sir, quantity of charge flowing past a point multiplied by time gives current. False. no. Sir, because current is equal to charge by time. On time. It's not multiplication. It is divided by time. Okay. So first one is false. Second one, True. yes, true. Second is true. Flow of charge through a conducting wire connected to a cell is due to chemical reaction inside the cell. Correct. Next, resistivity increases. True, sir. True. True. The decreases with rise in temperature. True or false? Sir, true. True. Opposition increases, not decreases. Think of it in terms of collision. When the temperature rises, the stationary ion will start to vibrate. So the flow of electron will be more affected. More affected, not more. Because the passage will be, the obstruction will increase due to vibration. Okay. So resistivity is directly proportional to temperature. So it is true. Fourth one, False. fourth one is False. क्योंकि power दिया है, power नहीं है उसमें. Only I, V and R. So it is false. Question 5. True, sir. Is it true? True. Yes. You tell me. 5. पता ही नहीं उसको चल क्या रहा है. So you sit with somebody who has volume, borrow somebody's volume. Question 5 is true. True. 6. Sir, false.
Sir, it is false. Not completely actually. Conducting wires offer resistance to the flow of electron. ठीक है, collision, word collision आना चाहिए. So it is Sir, false. because resistance is due to collisions of electrons with atoms and not due to the mutual No, it is mutual also. It is with the atoms as well as themselves. I have given, right? Collision of electron with fellow electrons as well as positive ions. दोनों से होता है. तो ठीक है, this is slightly ambiguous. But this is not completely false and not completely true. But you will say it is false. Collision plays a major role. ठीक है? Okay, question 5. Express the charge of an electron in coulomb. 1 point ये नाटक होती है और बना देंगे सब्जी रोटी हाँ शाम के जो का है वो Okay. Express the charge of an electron in coulomb. 1.16 Minus Sir, minus 1.6 into 10 raised to the power minus 9. minus 19. The charge on electron is negative. Minus 1. Magnitude was correct. Minus 1.6. Okay. Okay. Then how many electrons produced in 1 coulomb charge? Yes. 6.25 into 10 to the power 18. 18. 6.25 into 10 to the power 18. It is 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 9. That becomes 6.2. Manganese is used for making standard resistors. Why? Because it has high resistance. Low temperature. नंबर दे दूंगी ना जैसे उसमें लिखो because manganese is an alloy and alloys have high resistance. That's why they are preferred in making commercial resistors. Okay. Question 8. A copper wire of resistivity rho is stretched to reduce its diameter to half of its previous value. What is its new resistivity? Sir, it will not change. Very good. It will not change. Resistivity is independent of dimension. What is going on? Question 8. तूने च्युइंगम मुझसे लेकर तू खुद चबा रहा है क्या अभी? क्वेश्चन 8 का क्या आंसर है? सेम रहेगा बिकॉज रेजिस्टिविटी का डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं. It will only change when the material dimension. क्या बोले उसमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है. उसका L और A से कोई लेना देना नहीं. ठीक है. Resistivities of copper, silver and which is the best resistor? Question 9. Sir, constant 10. क्या Why? Constant 10. Sir, because it has high resistivity. That is why. It offers more resistance. Yes. Best resistor वही होगा जिसका resistance highest है. Okay, so it is constant 10. Name the 3 devices which work on heating effect of current. Geyser, iron, oven. Heater. Okay, what is volt upon ampere? One. Oh, very good. Okay, unit of 1 ohm is equal to. Yes. Name the scientist who gave the relation between potential difference and current. Okay, Simon Ohms. Simon Ohms. Yes. Simon or Simon, whatever.
What is coulomb per second? Current, electric current, charge upon time, right? Think about the physical quantity. Coulomb is unit of charge, second is time. Charge per time is current. 14A. Resistivities of few substances at 20 degrees Celsius is given below. Which of them is the best heating element? Sir, nichrome. Yeah, nichrome is the best because it has the highest resistance. Heating के लिए you need maximum resistance. Okay, what do the following symbols stand for? Rheostat, variable resistance. Rheostat and plug key. Rheostat, variable resistance बोलो. Variable resistance and Plug crossing bar. key. Variable resistance and Crossing bar. crossing bar without joint. Okay, draw a circuit diagram showing 3 resistor plug key in series. 3 resistors, 3 cells, plug key in series. Show the direction of current. Hello everybody, draw in your notebooks. Draw it fast. Everybody draw and turn the notebook like this. किसने किसने ड्रॉ कर लिया दिखाओ. प्लग की तो करंट कैसे चलेगा? It has to be close. जो क्वेश्चन में दिया वो बनाना है. क्या नहीं दिया? पढ़ा क्या क्वेश्चन को? पढ़ता नहीं है क्वेश्चन. किसका किसका बन गया दिखाओ. गलत है. कुछ तो गलत है उसमें. Sir, ऐसा. इनकम्प्लीट. क्वेश्चन पढ़ो. दो दिखाए. करेक्ट है. आर लेवल कर उसको. Okay. यस. लोड के बगैर कैसे चलेगा? शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा? हाँ, मेंशन नहीं किया तो भी लगाओ. Wrong. Figure out what is wrong. I'll tell you what is wrong. लेबल डायग्राम होना चाहिए. प्लग की में के लिखो. के या की. डायग्राम should be labeled. Circuit should have some resistance. Directly तो नहीं कर सकता. तीन रेजिस्टेंस किसने बोला? ठीक है अभी ठीक है. तो सर्किट में क्या है? R represents resistor of the conductor या लोड. कुछ तो चाहिए अपने. ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते. तो यहाँ पे पॉजिटिव से देखो, तुम्हारा ये गलत था. डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होगा. देन K
ओके, K क्या है? क्लोज्ड की. Okay, that's it. Direction of current is always from positive to negative outside. ठीक है. State Ohm's law. Give the connection diagram for setup of its verification. The Ohm's law states that at constant temperature, the current flowing through conductor will directly perform potential difference across the channels. Yes, and the circuit diagram to verify it. क्या है लोड? R है ना? वही तो लोड है और क्या है? चलेगा, वो चल जाएगा. बल्ब होगा उसका भी रेजिस्टेंस ऐसे ही दिखा सकता है. दिस इज लोड और रेजिस्टेंस इन द सर्किट. लोड का ही रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर में तो रेजिस्टेंस होता नहीं या मिनिमम होता है. अभी ओम्स लॉ के लिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर जो हमें किसी सर्किट के लिए अप्लायंस को लगाने के लिए हमें कुछ रेजिस्ट करना है, तो फिर हम रेजिस्टर की जगह पे बल्ब लगा सकते हैं. नहीं, बल्ब वो रेजिस्टेंस, बल्ब को तो फिक्स रेजिस्टेंस है, वेरी कैसे करें? उसके लिए तो रियोस्टेट लगा सकते या और एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा सकते. ठीक है. हाउ विल यू मॉडिफाई दिस सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा क्वेश्चन 15. अभी ये 16 डिस्कस था. So how will you, ओम्स लॉ में क्या चाहिए? V और I. तो हमको मीटर चाहिए. ओम्स लॉ के लिए हमको क्या चाहिए? करंट और ठीक है. ये क्या हो गया? I. ठीक है. पोलैरिटी पहले तो B और A चाहिए, फिर हमको देयर विल बी सम मैकेनिज्म टू चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टर भी लगाना पड़ेगा. आ रहे ऐसे मॉडिफाई होगा. ओम्स लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा. B चाहिए, A चाहिए. B I नोट करना है अलग अलग वैल्यूज के लिए. तो अलग अलग वैल्यूज कहाँ से आएगी? RH वेरी करोगे या कहीं कहीं पे यहाँ पे बीच में एरो डाल देते हैं. एरो दैट शोज वेरिएबल पावर सप्लाई. जहां पे भी बीच में एरो आया वो चीज वेरिएबल हो जाती है. ठीक है, तो इसकी बजाय तुम ये करो. दिस इज मॉडिफाइड डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो, फिक्स का रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर सकते. वो जो फिक्स जो हो गया उतना ओम का फिक्स हो गया. वेरिएबल का 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस पोजीशन. समझिए 100 ओम का वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस जॉकी, राइट, इट कुड वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. whereas अगर ये है इसका 100 ओम है तो 100 ही रहेगा थ्रू आउट. ठीक है ना, जैसे फैन का रेगुलेटर है. So when you are changing the position, you are changing the resistance. That's how you are varying the current. इसके वजह से स्पीड कम ज्यादा होता है. ठीक है, तो this is a variable resistor. If it was directly connected, it will run at one speed, which is full speed. So Ohm's law में variable resistance होता है. Experiment के लिए क्या Ohm's law वेरीफाई करना है. रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट आएगा जिस डिवाइस का हम चेक कर रहे हैं. इसके अगेंस्ट में ये चेंज कर रहे हैं तो इसमें से जो करंट जा रहा है वो यहाँ मेजर कर रहे हैं. करंट इसके अंदर से आ रहा है तो इसके अंदर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो उसका V by I हमेशा सेम आएगा. ठीक है. यस, फिर हम रेगुलेटर को फैन की जगह किसी और अप्लायंस में लगा सकते हैं.
उसके लिए अलग रेगुलेटर आएगा। ये रेजिस्टेंस इसके लिए रेटिंग होती है हर एक की, अप्लायंस पे डिपेंड करेगा उसका कितना करंट रेटिंग। ठीक है, तुम सिंपल ओम्स लॉ पहले समझ लो, अप्लायंस तक मत जाओ। V इज इक्वल टू आर आई, वो सारे कैलकुलेशन देखो कौन सा है। ठीक है, ये समझ आ गया। सो लेट्स गो अहेड। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। What are the SI and commercial units of electrical energy? Sir, joule. Yes, SI unit is joule. Commercial is Kilowatt hour. kWh. Is everyone listening? SI unit of energy is joule. Commercial unit is kilowatt hour. It is also known as kilowatt hour is also known as 1 unit. Okay? जो तुमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किसमें आता है? यूनिट्स में। जो नंबर आता है वो दैट मेनी यूनिट्स है, उसको एनर्जी रेट से मल्टीप्लाई करो तुमको कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन वो एनर्जी रेट का स्लैब से 0 से मतलब 1 से 50 तक कुछ कॉस्ट है, 50 से 100 तक कुछ और है, 100 से ऊपर कुछ और है, तो स्लैब वाइज ऐड होगा। अभी यहाँ जो न्यूमेरिकल कर रहे हो वो सेम रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो घर वाला है वो वैसा नहीं है। ठीक है, ओके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। चलो, यू गेट अप, रीड क्वेश्चन नंबर 18। गेट अप। हाँ, ले बुक हाथ में। पेज नंबर ही पता नहीं। पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 18। Explain the following. Tungsten is used almost exclusively for the filament of incandescent lamp. हाँ, इसको उठा, पढ़ो, एक्सप्लेन कर, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। Very high melting point, so it does not melt easily and it has very high resistive property. So it resists most of the current. So due to that, heat is generated and it grows. Yes, because its resistivity is very high. सुना तूने क्या बोला इसने? Tungsten's resistivity is very high, therefore it generates lot of heat. Heat का क्या फॉर्मूला है? Heat is I square RT. तो टंगस्टन का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हीट प्रोड्यूस होकर मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हेन इट इज हीटेड ओके टू अ वेरी हाई टेम्परेचर इट बिगिंस टू ग्लो। ठीक है, तो इसलिए लैंप्स में दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड। ठीक है, बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, read and answer. The conductors of electric heating devices such as sources, electric ions are made up of an alloy rather than a pure metal. What is the explanation for it? We just answered already. मेटल जो होता है वो मतलब एक हाई हीट पे उसको हीट करते नहीं, heat. Alloys have more resistance than pure metals. ठीक है, so that's why it is suitable for heating elements. अपने को heating element में क्या चाहिए? ऐसा substance चाहिए which offers more resistivity. तो alloys का ज्यादा होता है। टंगस्टन एक प्योर मेटल है, ठीक है, लेकिन alloy is a mixture of various metals. So this offers very high resistivity, इसलिए that is preferred for heating element. ये हम कर चुके हैं पहले, है ना? बैठो। Okay, distinguish between kilowatt hour and kilowatt. Yes. Distinguish between kilowatt hour and kilowatts. kilowatt hour is the unit of doing work
And what is of power? Sir, unit of energy. Unit of energy. Work be energy here, so you say energy, not work. Kilowatt hour is unit of energy. Commercial unit of energy है ना? Whereas kilowatt is unit of power. ठीक है? Okay, question 20. चलो सब लोग ट्राई करो. Try this question, everybody. हाँ सॉल्व करो और क्या है, ऐसे तो नहीं कर पाओ. सॉल्व करो, बैठ जाओ, बैठ के सॉल्व करो. Everybody solve this question. क्या दिया हमारे को? This is question number 20. पेज क्या है? 140. ए हो गया तुम्हारा. दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा. Same area of cross section. Area of cross section is now. तो ऐसे कर लो. Length L, resistivity rho, area of cross section. Conductor B. ये भी रो होगा. लेंथ कितना है? लेंथ इसका L/4 हो जाएगा. L/4 मतलब 4:1 है, तो इसको 4L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या सेम है. What will be the ratio of current flowing through them when same potential difference is applied? So since V is equal to IR, right? तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा. इसका R1 ले लो, तो इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस RB. ओके, सो B अगर सेम होगा, ठीक है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट फ्लो? AI अपना IA अपॉन IB निकालो. So take the division. This means Sir, 1:4. is equal to IB RB. Yeah. Therefore, what is IA upon IB? ये निकालना है ना हमको. होगा RB divided by RA. ठीक है. बट RA कितना है? What is RB? क्या रिलेशन है? RB is equal to रो L by A. और RA कितना है हमारा? रो 4L by A. ये होगा. तो RB लिख दो, रो L by A इंटू RA कितना था? रो 4L by A. This is also equal to 1/4. So what is the ratio of current? 1:4. Okay. The answer is 1:4. So these questions are simple. You just have to make logical relations and the definitions. Question 21. What happens to resistance of a conductor if its length is doubled and radius is half?
4 times the. देख लो. Increases by 4x. Reduces, increases. करके देखो. कर लिया तुमने? हाँ. ठीक है. Sir, Same logic है, same logic. Same logic, right? The resistance is 8 times. Resistance is 8 times, he says. Everybody do it and verify. Length double. What is it? 8 times. Length is double. करके देखना पड़ेगा. Don't rely. What happens to resistance of a conductor if its length is doubled We get. and radius is half? So what is R1? Rho L by A. Now what is R2? Rho 2L and A by 2. ये होगा ना? What is half? Radius is half. So what is A? A by 2 नहीं होगा. So this is rho L upon pi R square. So when the radius is half, क्या होगा ये? Length is doubled and the radius is half. R by 2 square. ये क्या होगा? 4 times 2, 8. 12 by pi R square. It is 8 times R1. Read the question carefully. It is not area. It is radius now. ठीक है? ये ऐसे करके करोगे तो होगा. समझ में आया सबको? So R2 becomes 8 times R1. Draw the graph of current and potential difference for a metallic conductor. Straight line. VI graph will be straight line. And you know already what is 1 ohm. 1 ohm is? When 1 ampere of current flows through 1 volt. Yeah, R is V by I, na? V by I. This means 1 ohm is 1 volt by 1 ampere. इसको define कर दो बस. Okay, when an ampere of current flows through a conductor on the application of 1 volt of potential difference across it. Okay, that resistance is 1 ohm. Right? Now, short answer questions. State 3 factors on which the heat produced in a conductor depends. I square RT. So current, resistance, and time. Okay, from the formula. Heat depends on square of current. You have to say square of current, resistance of the conductor, and the time for which the current flows through it. So give the characteristics of material used for making heating elements. Same thing. क्या लेना पड़ेगा? High resistivity. Okay. High resistivity and high melting point. दोनों होना चाहिए. ठीक है? And what is the next question? 25. Piece of wire is cut into 4 equal parts. Okay, do question 25. Question 25. Question 25. Everybody, I'll come and check. Sir, resistance will be R by 4 Yes. Part 1 is R by 4. because it will be divided into 4 parts and each part will be equal to 1 by 4 and resistance is directly proportional to the length. Yes. Wait. It is R by 4. First part is R by 4. Then
Which question is this? 25. Question 25. You have a total resistance is R. Now it is divided into 4 equal parts. So this is like R by 4 is connected in series with each other. So 4 times R by 4 is, this is series connection, right? So this will give you R. Now each of them is now connected in parallel. So what will be parallel? 1 by R by 4. So it will be 4 by R. 4 by R. By R. 4 by R. So how much it will be? So R by 16. This is R by 16 when they are each connected in parallel. Okay, so these two are the answer. R by 4, first case. Second case it is R by 16. Everybody understood? So you have to compare it, right? So this will be, this is 1:4, right? You have to compare, so you have to write it in the form of ratios. 1:16. How will you write the comparison? 16:1. This is 4:1. First answer is 4:1. Second is 16:1. Is it correct? Sir, it will be 1:4. R by 4. The second resistance is 4 times the first one, or 1/4. First one is 4 times higher than the last one. So there go. It is like 1:1/4. 1:1/4, right? You have to compare, ना? तो क्या आएगा? 1:4 होगा कि 4:1 होगा? 4:1 होगा. The first one is 4 times higher than the second one, right? And first one is 16 times bigger than the second one. You make the, for comparison, what do? You make the denominator common, right? That's how you compare. ऐसे कर लो, R1 is to R2 is equal to 4:2. ऐसे कर लो, ठीक है? Just to be safe. मतलब तुम ओरिजिनल को पहले रखो. That clear? So we can discuss it later. Okay, we got the answer. Just the Sir, expression. but in second question, you are calculating it, calculating the total resistance in parallel. So it will be R by 4, or you will take it as 4 by R. This It will one, be, it will be R by 4, right? each is 1 by R by 4. Each one. What is one resistance? Each one is 1 by R by 4. So it becomes 4 by R. Then 4 times common denominator. You get it? 1 by R1 होता है ना? So R1 कितना है? R by 4 है. Yes? Okay, sir. Okay, next. What is the next question?
We still have. When is it going to end? 5 seconds. 12:30. 12:30. 12:45. 30. Next question. A piece of wire Yes, sir. Sir, it will be 4 times the original. resistivity or resistance? What is asked? What is asked? Resistance. Is it resistivity? What is the difference between resistance and This is exactly the point. You tell me. Is resistance and resistivity same? Why there was the need for resistivity? Because resistance changes with dimension. Remains constant. Okay. So if the length is doubled, then what happens to its area of cross section? Volume is constant. If the length is doubled, area will be half. Half. Okay, and that's how resistance becomes 4 times. Clear? Question में सिर्फ length pull कर रहा है ना, तो area भी तो कम होगा proportionately. Length doubled, area gets half, and then you can find out R1 R2 relation. So it increases by 4 times. Okay. All right. Now we have so many classwork exercises. There are about 34 of them. So if you do these many questions, application will one of the एकदम simple हो जाए. You'll be prepared to tackle application questions. चलो. So we can easily do one question. We have 5 minutes. एक question तो हो जाए. हाँ? Sir, which question? Classwork question, numericals. Okay. Ask. Ask them answer, please. Why? Yeah. You just don't worry about it. Okay, classwork exercise 1. Problems. What page number is this? 140. Question 1. So this is the relation between what is the time taken by 60-watt bulb to consume 3000 joule of energy. So power is equal to energy upon time, right? So T is equal to E by P. Find out. 60. How much is this? So 50 seconds. So power gives you each second how much joules of energy is consumed. Now here power. Again, P is equal to E by T. Use this. Now this is 36. Divide by 1 minute, which is 60 minutes. 60. So these are similar questions. You can skip similar ones. Electric motor uses 40. What is the topic? 5 also similar. 8. Let's do 3, 4. I'm skipping. Okay. Let's go to question 5. You are given 3 resistors. You are given 3 resistors of 10 ohm, 50 ohm, 20. So a battery of EMF 3. Okay, then we draw a circuit diagram.
Placing 10 and 15 in series. And the combination in parallel 20. Alia, two. Everybody draw. वोल्ट मीटर बोला क्या बनाने को? कौन कौन है ये? प्रिया प्रजापति, राजवीर। देखें जरा शक्लें देखें इनकी कैसे दिखते हैं। प्रिया, आर यू देयर? Yes, sir. Unmute your video. Why the videos are off? Who is Rajveer? Sir, I am in my native place. So, Sir, so there's an internet problem. okay, we'll settle it after I come back. माइक ऑन कर माइक। डर गया है शंभू, शंभू डर गया। हेलो भाई। चालू करके रखना। अबे भाई बाल को क्या हो गया? कटप्पा। हाय हाय। अभी भी है भाई बाल। अरे यार तेरे बाल पहले बहुत अच्छे चल रहे हैं। वैसे काट दिया। भाई अरे भाई मैंने कहा बोला क्यों आयुष, वीडियो ऑन कर भाई। अरे वीडियो ऑन नहीं होता। अरे कटवाए क्यों? ऐसे कटवाए क्यों है? आयुष कटवाए क्यों है? बाइसेप दिखाना भाई। ये ऐसे बाइसेप। हाँ। एकदम रिकॉर्ड होता है जस्ट ये बंद कर दो।
ये काम है इसका नेट वीक है. What's going on? So 15 minutes too short. Too short for. So, get ready. ये तो लिख सकते We have to do which question 15. So we had to draw the diagram for question 5. So 3 resistors, 10 and 15 are in series. So this is 10 ohm, this is 15 ohm. Okay, and then it is in parallel with 20 ohm. Do you have a key? We like that. This is how it should be. How many of you got it like this? So you have two resistances in series with a 20 ohm resistor in parallel. And then you have a battery. So battery means it should have two cells, two or more. Okay, more means three things. एक तो कितने का होता है 1.5. 1.5 plus 1.5. Two cell is enough. Okay, and then you have a plug key and meter. This is it. और इतना ही काम है बस, not the head. समझ में आया? Is it? Have you done it like this? So you got one cell extra, that's okay. Make it clean. Everybody is going close. Battery, no battery. So it has to be more than one. And each cell is 1.5. If it is 6, you could have made 3 cells. Or 4, 1.5, 1.5, 3. So always in a multiple of 1. And that's so question 6 is repetitive. We've already done this kind of question. Answer to question 6.
Third D. Yes. So why is D most suitable for heating element? Maximum resistance. Maximum resistivity. C, right? Low resistivity. Oh, maybe D can. Which of them is most suited for use in heating element? Heating में resistance ज़्यादा चाहिए. ठीक है? D. Why C? D. This D. D. 7. We need to make a circuit diagram. Now see here EMF it says 1.5 volt, but it says battery. Okay. Yes. So that the okay, question 7, everybody try. What is given here? E is equal to 1.5 volt. I is equal to 1 ampere. तो R कितना हो गया? 1.5. R कितना आना चाहिए? Given resistance से कितना बनना चाहिए आप? 1.5. तो अभी हमारे पास क्या क्या रेजिस्टेंस है? सो हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये 3 रेजिस्टेंस को मैं कैसा कंबाइन करूं कि मेरे को 1.5 ओम मिलेगा? How should I combine them? तो combine 2 and 1 in series और उसके पैरेलल में 3 आएगा, तो मिलेगा. देखो R is equal to, let's say this is R1, this is R2, and this is R3. So R must be equal to R1 plus R2 plus ऐसे करोगे तब आएगा. देख लो, देखो आता है क्या? ये करके देखो. ये तुम्हारा क्या है? 2 ओम 1 ओम. ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा. It's equal to 1 ampere. 1 ampere दिखाना चाहिए. अब इसका तो 1.5 वोल्ट लिख दो. Now see here, it says
EMF is 1.5 volt. तुमसे बात कर रहा हूं मैं. EMF is 1.5 volt. लेकिन अब यहाँ पे हमने 3 सेल लिखा है. More than one cell लिखा हो, that is battery और value लिख दो उसका. ठीक है? But अब यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5 क्या है कैसे? We don't know. But if it is battery, it has to be more than one. ठीक है? इसमें भी the current will split multiple path. तो ऐसे आएगा. कैलकुलेट करके देख लो. समझ में आया ये कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 7. समझ में आया कैसे किया ये? अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हुए हैं. बोल रहा है एमीटर कितना दिखा रहा है? 1 एम्पियर दिखा रहा है. मतलब ये और ये तुम्हें दिया हुआ है. तो रेजिस्टेंस कितना मिलना चाहिए 1 एम्पियर आने के लिए? 1.5. लेकिन तुमको क्या दिया है? 2 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम. तो हाउ विल यू कनेक्ट सो दैट द इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज 1.5? तो ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकते हैं तुम. सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? Read the question and see the diagram. Then you will understand. एमीटर मेरा 1 एम्पियर दिखाना चाहिए. तो इसलिए तुम डायरेक्टली सीरीज नहीं डाल सकते तीनों. हाँ? बढ़िया. सही. आज बात हो जाएगा. आगे बढ़ो सस्तु बॉडी से. वही पकड़ के बैठे हैं. तो राइट नाउ खाना ये चलेगा. उससे आगे बढ़ना है अपने को. मत हो. कंट्रोल कर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7 सबका हो गया. 8. Calculate energy consumed by Sir, 1800 joule. So energy is power into time. So I am skipping it. ठीक है? I am skipping question 8. Anybody needs help in question 8? Easy है ना? Energy is power into time. Energy can be thought in terms of work also. ठीक है? Next is 9. 2-volt battery is connected across a small bulb. तो 9 किससे होगा? ओम्स लॉ. 9 में कोई चैलेंज है किसी को? ठीक है? ओम्स लॉ. V is equal to R आया या I. So I am skipping 9. Let's go to 10. This is V equal to IR से हो जाएगा. 10. What is 10? Cost of energy for running an electric motor of 1 horsepower. 5 hours a day. What is 1 horsepower? HP. This is equal to 746 watt. This is 0.746 kilowatt. Okay. Whenever you are calculating cost of energy, you have to calculate kilowatt hour. पहले power को convert कर दो kilowatt में. Time is month of November. How many days are there in November? 30. So time is how much? 30 into each 5 day. into 30. 150 hours. Okay. So time of how much time? In hour it becomes 150 hours.
for month of November. What is the cost of energy? Rate is energy rate. Energy rate is 1.5 per kilowatt hour. Per unit here, per unit. Unit is. So what is energy cost? Power into time. निकालो कितना आ रहा है? This is the energy cost. Into 1.5 करना पड़ेगा. ठीक है? कितना रुपीस में आएगा? कितना आ रहा है? 62.9. 62.9. Everybody is getting this? That's it. Question 11. What is the total resistance between 1 and B? A and B. Sir, it will be 167.85. 167.8. 5. 167.85. Yes, sir. इसका मतलब किसने बोला था 62? Are you doing time pass? गलती से रॉन्ग हो गया तो आंसर सही आना चाहिए. माइनस माइनस प्लस. मतलब तो टोटल टाइम पास वाले मोड में है आज. कोई सुधार नहीं हुआ है. और किसी का इतना आंसर आ रहा है? तू क्या कर रही है? मोबाइल से ठीक हो गया? Sir, no, one has to 746. हाँ. If P is equals to 746. हाँ? One P is equals to 100 and P is equals वो to. डेफिनेशन है हॉर्स पावर का. 746 वैट ही होता है 1 HP हॉर्स पावर. जब भी यूनिट्स ऑफ पावर किया था यू नॉट प्रेजेंट. वीडियो लेक्चर देखा तुमने? मैंने कुछ भी चेंज कर दिया. ठीक है तो वो देखे ना उसमें मिल गया. और ये लास्ट ईयर से चल रहा है. पावर हमने कब सीखा था? 9th में. मोशन चैप्टर में पावर है कि नहीं? वर्क एनर्जी पावर सेम है. वहां पे भी है. और किसी ने कैलकुलेट किया आंसर? लेट्स वेरीफाई. समबडी डू कैलकुलेशन. और एक दिन करो. हाँ देखो 15 टाइम्स 15 इज 225. तो वो आ जाएगा 22.5. या कितना आएगा? 2250. हाँ तो वो आएगा 225. 225 into 746 करो. सब एक दूसरे को देख रहे हैं. कोई मेहनत नहीं कर रहा. करो जल्दी फटाफट. हाँ 150 into 1.5 ऊपर से नीचे तक पढ़ो ना. क्या नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तुमने इसके लिए नहीं समझे. फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन. एनर्जी कॉस्ट निकालना है उसके लिए एनर्जी रेट दिया है. एनर्जी रेट है 1.5 रुपीज पर किलोवाट आवर.
6, 7. This is correct. This is correct. Okay, this is correct. Who is that? Ayush. Ayush, what you got is correct. Okay, next question. Question 11. What's the answer? Whosoever knows question 11 ka answer, raise your hand. It is one of the. See the question. What's the answer? Yes. 5 hours. We got the answer. 5 hours. सीरीज में है ना ये खाली सांप जैसे दिख रहा है वो कनेक्शन क्या है सीरीज तो ऐसा तुमको डराने के लिए अगर 100 रेजिस्टेंस भी दे दिया होता तो देख के मिल जाएगा आंसर सीरीज कनेक्शन है ना तो इट इज 5 आवर किसको किसको ये आंसर मालूम पड़ गया था क्वेश्चन देखने के बाद बी ऑनेस्ट इसको पता था वाओ आई एम सो हैप्पी आई विल नॉट ट्रस्ट यू इसको ये ऐसे ही हाथ खड़ा कर वो सिर हिला रहा है और ये हाथ खड़ा है दो मिले मेरे को ओके सीरियसली 5 आवर किसको मिला फिर से बताओ मैंने इसको बैठा इसको पूछ झूठ बोल रहा है रत्नेश गलत बोल रहा है ना उसको कंसंट्रेशन इज लॉस आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दिस बॉय क्या क्या खाना शुरू किया हैव यू चेंज योर डाइट और समथिंग Be serious. You just drifting. This was the easiest question of the day. नहीं ये 5 hour. Okay, ये question easiest था. Next question. Calculate the effective resistance across AB. कितना आ रहा है? 200 आ रहा है. चलो देखते हैं. किसको किसको 200 आया? Question 12. ये A C है क्या? B C. तो देखो यहाँ पे करंट कैसे दिखा रहा है? ठीक है ऐसा है ना 100 अभी देखो जहाँ पे करंट का एक ही पाथ है करंट का एक पाथ कहाँ से कहाँ है यहाँ से यहाँ मतलब ये दोनों सीरीज में जहाँ पे करंट का एक पाथ है वो वाले रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में है ना तो ये कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस 160 फिर 160 पैरेलल टू 40 अगर दो ही रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका आंसर आता है RAB इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम क्या आएगा ये दोनों तुम्हारा क्या बन गया 160 let's take this as 160 into 40 divided by 160 plus 40 640. so this is 60 divided by 200 32 yeah somebody was saying 200 who was that देखो so you have to actually analyze which part is in series and then whatever first you break down तो minimum करते जाओ हाँ एक पाथ है ना तो ये सीरीज है तो पहले इसको टोटल करो फिर जो आ रहा है उसको टोटल समझ आ गया ओके क्वेश्चन नंबर 13 करो अभी ये सब सिमिलर क्वेश्चन है सारे के सारे 13 में क्या है
M and N 13 क्वेश्चन क्या है? अब ये ऐसा है, Three. now there are 5 resistors. तो बताओ कैसे होगा? M N यहाँ पे चाहिए मेरे को resistance, इसके बीच में कितना resistance है? One सब रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। बताओ यहाँ कैसे होगा? देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ, ये कैसे हो जाएगा? You can redraw the circuit like this. जो तुम्हारा A और B है वो क्या है? ये A है, ये C है, ये तुम्हारा B है, ये क्या है? M. This is how you have to analyze. ये तो कंडक्टर है ना, मैं तो उसको कैसे भी स्ट्रेच करके बना सकता हूँ. तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. तो अभी ये और ये सीरीज में है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा R बिटवीन M N इज इक्वल टू 1 प्लस 2 into 1 divided by 2 plus 1 plus 1. तो आ गया 1 plus 2 by 3 plus 1 plus 2 by 6 by 3. This is equal to 8 by 3. I am getting the answer 8 by 3. Don't. किसी को मिला 8 by 3? समझ रहे कैसे किया? देखो ये दोनों सीरीज में, तो ये कितना हो गया? 2 के साथ पैरेलल में 1, तो 2 into प्रोडक्ट बाय सम लेने का, अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो प्रोडक्ट बाय सम, और फिर वो जो आएगा वो इनके साथ में सीरीज में लास्ट, ये नेटवर्क का जो रजिस्टर आएगा इक्विवेलेंट, वो इन सब के साथ में क्या सीरीज में है ना, ये 1 है. Okay, is my calculation correct? Sir, it was my white somewhere. You can give it back to them. Telling you the past, you cannot take it back. You got it back. It would to pass through. I also need it. Okay, everyone got the answer? Understood? Very quick, bolo, yes, no. Understood, everybody? Ayush? Sir, can you explain again? Effective resist formula of effective. This is wire, right? I can bend it like this. This I can bend it like this. Doesn't affect the circuit. This B I can press down. B I can press down. And I can stretch it. So I get this circuit. From this I can get this. Correct? But now
This is better. So A से B तक जाने में एक resistance है, फिर B से C तक एक है. This is one path only, no? A to C is one path. So this must be in series. So this becomes 2. 2 in parallel 1. This is 2 parallel 1. So what is 2 parallel 1? 2 into 1 divided by 2 plus 1. Whenever you have only 2 resistors in parallel, R1, R2. So what is the answer? 1 upon 1 by R1 plus 1 by R2. So when you solve it, you will get R1 into R2 divided by R1 plus R2. Isn't it? Two resistors. When you have only 2 resistors in parallel, this is product by sum. Okay? The parallel answer is product by sum. So this is what I did. Product by sum. So then now these 3 resistors will be in series. Okay? Yes. So 1 plus this plus this. क्या हो? इसको 2 plus 2 by 3 भी कर सकते थे. So it still gives you the same answer. Okay. Understood. Okay? Everybody okay? Proceed. That's the next question. So now all the other question you should be able to do. Okay? All questions. Now look at question 14. Everybody do question 14 and tell me the answer. Question 14. Question 14. 45. 45. 60, 60, 60. So 45 सही है. 60 are between A and B. है ना? तो ऊपर के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उससे क्या आ जाएगा 180. Then 180 is in parallel with 60. तो कितना आया? Into 180 divided by 240. Right? 6 4 या 24. 6 10 या. Then 2 5 are 2 9 yeah. Are you getting 45? Anyone got 45? Oh, sir, I got it. देखा सर. मुझे सबसे सर मैंने एकदम स्टेटमेंट एकदम अच्छे देखा है एलिगेशन की वो तो चेक कर. ओ इसलिए बोला don't go there. Okay, next. Okay, so I think everyone understood, right? How we did it? पहले वो जो 3 सीरीज में था उसको ऐड किया तो 180 और 2 ही रेजिस्टर बन गया फिर. So product by sum, simple. Reduce the network into 2 resistors and then this.
Question 15. Now let's go fast. Question 15. Sir, 0.4 ampere. 0.4 ampere, right? Is there anything to be understood in question 15? R is equal to 10 into 50. So total resistance of 10 bulbs is 500. है ना? Series में है. और V is 200. Therefore, I कितना हो जाएगा? V by R. Zero point 4 ampere. You got it right, everybody? 0.4. Yes. Calculate the resistance between P and S. तो कर नहीं रही है क्या कुछ? Calculate the resistance between P and S. Fast. 3.2. 3.2. Yes, sir. Yes, sir. Sir, no, Sure. 3.2. और 5 plus कितना आएगा? 5 plus Sir, 3.2 नहीं है, sir. प्रोडक्ट वाइज मालूम है मेरे को. 6.2. 25 plus 31/25 आ रहा है. Are you getting 31/25 ohms? 31/25? So upon 25 years old. So upon 5. Sir, 0.5. 5, yes. कितना हुआ? 6. Everybody got it? Yes. Okay. Do question 17. Sir, Yes. is it always mandatory to draw a voltmeter and ammeter? Not mandatory, but when it is mentioned, you should. If it is not given in the question, show. No need. It is given in the next question. Because next question follows from the first, from the previous. Actually, you need not draw the diagram unless asked for it. But sometimes it is better to draw the diagram. It helps you solve the question and analyze it. What's going on? Sir, solving questions. Ask me question here, copy. Next question. Any carried. So question 17. Carry question 17. Sarika has drawn the diagrams. Question 7. Show me the diagram. Question 17. Have you drawn it? Have you drawn it? Or were you busy? Question 17. What is
So, question 17 is only the diagram. The calculation follows in the next question. Okay? Yeah, here we go. Battery of so how much will be the total potential? 4 into 2, 8 volt. This becomes 8 volt. Read the question. You're not reading the question. That's it. 5 of the square. Part 1 is only this. Part 1 is only this. Redraw the circuit above, putting an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure across 12 ohm resistor. So second में 18 में क्या हो जाएगा? Sir, is this correct? हाँ? 18 में you have to put a voltmeter here. Uh, And ammeter को यहाँ लगाओ. Now, so this is question 17 and question 18. In 18, you just have to put the meter. What would be the readings in ammeter and voltmeter? मतलब तुमको इसका वैल्यू निकालना. निकालो. So what will be ammeter reading? I is equal to V upon R. R. Total resistance is how much? 25. This is 0.04. 0.32 आना चाहिए. Is I correct? We will also calculate V for the voltmeter. Across the 12 ohm resistance. So let's call V3 is equal to, this is V1, V2, V3. V3 निकालना है तुमको. So what is V3? V3 will be I into 12. 0.32. निकाल दो. Should be 3.84 volt. Verify. Correct? Sir, how resistance will be equal to 25? It will be I plus 8 plus 12 is how much? 8 plus 12 is 20 uh, plus 5. It is in series, right? To calculate current, current has one path and all the resistances are in series. Okay? So you're not taking the voltmeter resistance. Everybody got this answer?
Okay. Let's do the next question. For 70 and diagram C for 70 and Yes. No, in 18 B and A that during the question you understand. 18 only these figures are added and these calculations are done. So everybody understood question 17 and 18? Next question. Now this is not a cell, it is 220 volt supply. That means it is AC mains. Okay, it is AC mains. And the bulb given is, what is the rating of the bulb? 100 watt at 220 volt. And this is so you have to now find current. You have to find what is the current. कैसे निकालोगे current? How will you find current? So first we'll find I1 and I2. So what is given? Power and volt. Power and volt is given. This is V1. This is V. This is V2. E. This is so I1, I2, and then add them. What is I1? I is E by E1 by E. This is P2 by E. P1 plus P2 by P. So 100 plus 60. Okay, upon 220. 160. 8 by 11. You can leave it like that or what you can find out. Okay, total power upon whatever is the voltage. Now this is a good question, mark 20. Question 20. चलो 20 वाला देखते हैं कौन करता है.
तो एक चीज बताओ क्या मैंने अपना बाइक राइड एक्सप्लेन किया कि नहीं तुम लोग हाँ सब सुने सर बाइक राइड की आवाज नहीं है। हाँ बाइक राइड क्या तो मैं यहाँ से कुंभ में बाई माई बुलेट कुंभ गया want to see the want to see the images यस सर। हाँ नहीं इलेक्ट्रा ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि काफी मिनट लोग हैं एक ब्राउजर विंडो खोलो ओपन अ ब्राउजर विंडो आयुष तेरे को दिखेगा क्या सर स्क्रीन शेयर कर दो सर। ये नहीं ये क्लिक कर इधर 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 क्लिक कर इधर यहाँ पे क्लिक कर ये बंद करना ये बंद करना यहाँ पे क्लिक करो व्हाट्सएप वेब
High length. What is that? WhatsApp web. एक मिनट लद्दाख छोड़ के अभी तक सब कुछ किया है मैंने. ये क्या हो गया? जैसे WhatsApp web. लिंकेड डिवाइस क्यों नहीं हो रहा है? लिंक नहीं हो रहा है. सर आप क्यूआर उसमें नहीं कर रहे सेटिंग्स पे जाओ ऐसे नहीं हो रहा है ना. I have to log out. I am logged in somewhere. कहाँ थे? वहाँ से. यहाँ से कैसे हो? नहीं हो रहा. क्या नीचे क्रोम में? एक मिनट. ये आएगा कि नहीं पता नहीं. आ तो रहा है. वेट. हमें पूरी करनी है सर हमारे रोल मॉडल हो गया अरे तो पता नहीं देख छोड़ दे वो बाहर से रिसेप्शन से अंदर आएगा. भाई तुम चिल्लाओ. ये सब जा रहा है. नहीं अभी शेयर मत कर. पहले देख आ रहा है क्या इस पे. मैक्सिमाइज कर. मैक्सिमाइज. This is when I started. That was 4:50 a.m. in the morning, 22nd Feb. 22nd Feb, 4:50 a.m. in the morning. ये मेरी वाइफ ने लिया है वीडियो. फिर से चलाओ उसको. आवाज आ रहा है क्या? ऊपर गिरने स्टेशन के सामने. ठीक है. बंद कर. ये वाला चालू करो. हेलो. सुन ना अभी सब आंसर मिलेगा. इधर देख. Maximize. Okay. So you get all your answers here. One way. 11 days on the road, 20 days I was at my village. So I'll tell you, when I started on 22nd Feb, first halt was at Ujjain MP, Mahagaon.
Okay, so go to the then second was Damo. I'll explain. Go ahead. So this is Mahakal. So I started at 4 a.m. in the morning, 4:50. I reached there 6:30. 6:30 के बाद, and then that's the corridor. Okay, this is next day. This is next day. What's the place? There was anybody from MP here? Yes. Sir, I'm Aditya, from. go back. Can you see this? This is where the Tropic of Cancer passes. This is. Can you see this? This is a tourist attraction now. Go ahead. Go ahead. How far away from Prayagraj? 232. Yeah. And this is 97. So I'm just going on the way. Go ahead. Arjit Prayagraj. This is established by Sri Ram, Treta Yuga. This is Bharadwaj Ashram. When he was in exile, 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था. So this Thapna was done by Sri Ram. That's what is written there. Treta Yuga. Next. So, but this is Bharadwaj Ashram. Listen. This is Bharadwaj Ashram, and this is the same Jyotirling, not Jyotirling, Shivling, and this is Gyaramukhi Hanuman Vigrah. What is it? Panchamuki तुमने सुना होगा. Gyaramukhi. What's that mean? Then this is where I took a dip at Sangam. And then I went to Baidyanath, Jharkhand. That was not short. ये मैं हूँ बैद्यनाथ. ये देखा तुम्हें? पता है इसके बारे में? Go ahead. बैद्यनाथ पता है झारखंड में. Okay, so I completed 2000 plus kilometer when I reached Baidyanath. This is now I am returning from my village. This is in near Banaras, 25 kilometers. So just getting out of the village. Okay. Then the first destination is Vindhyachal. Have you heard about Vindhyachal? Yes. Next. It's a Shakti Peeth, Siddha Peeth actually. This is Vindhyachal. You went there? When? I also went to. Okay, great. So this is Vindhyachal Dham. It is getting modified right now in terms of development, etc. Alone. Mobile. इसी मोबाइल से. Next. This is, you will miss. Go ahead. This is my bike. ये तो देखा है ना तुमने. So अभी आएगा साउंड में. अभी ठीक है. मैं चल के गया. Those who have not been there उनको समझ नहीं आएगा. This is at the peak, मतलब 1200 steps. बड़े वाले. अभी मैं चल के गया. Same day from Vindhyachal to Mayhar, same day I went. Great. But I went on the bike. You must have gone in some. So this is Mayhar. No. I have a gym at my home. Okay. Next. This is Omkareshwar. What is it? Omkareshwar. So this is Ma Narmada. Like Ganges, we have. अभी तो देखा तूने. क्या देख रहा है? अभी आएगी बाइक फिर से. This is towards Omkareshwar. You have been to Omkareshwar also? अरे तू हर जगह गई है. This is. You have done 12 once. I have done 9 as well. 3 remaining comments. Kedarnath, Rameshwaram, and Krishneshwar. No, not yet. That's not Jyotirling. That's Vishnu now. So ये देखो, ये नर्मदा. Those who have not seen, this is Narmada.
Okay, next. This is different view. This is the best place I saw. Best place. So India is actually not known. Those who know India, na, वो foreign सब फीका पड़ जाता है. They've got everything here in India. Now my next aim is explore South. That's next. Sir, south is very I know. So ये वाला जो है next जाओ. So you have Omkareshwar on one side of the river and Mamaleshwar on the side before. And then there is a bridge in between. Rope bridge. No, you call some. I don't know. But this is the bridge separating the two. This is the Adi Shankaracharya statue, 108 feet long. Very recently put up. Next. That's it. These are different pics of the same place. Omkareshwar. Listen, na. If you listen, next. That's it. So I did all this. I don't know. This is yes. So this is the luggage, okay? So you can like minor. On the bike. This is so much, but on the bike it appears very little. So much it is. 3 suitcases. Right? All 40 liters. On the bike. You didn't see the bike? Next. Okay. This is how. So it is kept here like this. एक ये, दूसरा वो बाजू और इस तरफ. ठीक है? Close. Close that. Log out. नहीं इसको बंद कर दो. कैसे यहाँ से लॉग आउट करूँ? हाँ. तो आयुष देखो बाद में दिखाएंगे. ठीक है? I just gave you some break. ये क्या है? हाँ. Okay, back to business. Not much. Every day, 2 fillings for petrol, which is like what? Around 1,000 bucks for petrol and roughly about 2,000 for hotel and another 500 for food and all. So 3,500 per day. How many days? 11 days at least on the road. So not much. If you're going by plane, just the ticket will cost that. So this was very rich experience for that cost. ये match नहीं कर सकते. I mean, if you're an explorer, bike is the best. मैं तेरे को साथ में लेके जाऊँगा. And I go next time. मैं तो अभी ठीक है. सर अभी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पे सर? नेक्स्ट ट्रिप is planned towards south. Hopefully, God willing. Okay. 10 minutes. Okay, let's go. Question 20. Okay. You never ask this question, right? It's a etiquette. You should not ask. Teacher को पूछना नहीं. अच्छा, you're from Andhra Pradesh? I have been to Sri Sailam on my bike. I have been to Dwarka. I have been to Andhra Pradesh. Sri Sailam. Okay, guys. Okay. Silence.
Again, you should not ask age, not ask salary. It's a personal question. Age क्या है? Guess करो. Sir, 33, sir, 33. 54, 54. I just completed 54. Chalo, I will not answer any personal question. 2016. That time it was 160. But I have already spent more than 50,000. The accessories, armor, बहुत कुछ और करना पड़ता है सिर्फ बाइक से क्या this one. वो भी राइडर होना नहीं. I enjoyed alone. तो साथ में कोई और होता है तो it becomes a bottleneck. Everybody may not be as passionate a rider as you are. पता चला उसको कुछ हो गया उसको लेके जा रहे ट्रिप में बाजू. क्या तो इसके लिए गियर था ना देखा नहीं वो सब वो सारा अरेंजमेंट करना पड़ता था. I learned it after 2-3 trips. This is not my first trip to UP. I have been before also. उसमें सीखा मैंने. उसमें what you saying I discovered. Okay, next is. Yeah, yeah. I have seen him. Sir, Yes. sir, how many times did you do like this? This was my 5th or 6th trip. So many. Did you go? Then I went to. Where did I? Salem. This is again a. This is in Andhra. Then where did I go? द्वारका में बहुत सारे होटल्स हैं. डोंट रिमेम्बर द नेम. हियर सुंदर 5 star hotel. हाँ ठीक है. मैं 5 स्टार में बहुत घूमा हूँ. Actually, I took Hilton and I lived in Hotel Hilton in Spain. Hilton. Australia, I've been to Australia. I worked in Dubai. I work into technical consulting. Okay, so I used to visit countries every month. Yeah. So I'm a teacher by hobby. It is my second career. So I had corporate career for about almost 2 decades. Then I chose this because I wanted to teach my children, and then I started liking teaching. That's how I'm not a born teacher. I'm a trained, by hobby. That's why my lectures might be different. It's not a typical school के teacher जैसा lecture है. Yes. I was on the infrastructure side. जो पूरा ये जो banking है या railways है, there are various sectors. सबका IT infrastructure build करता है. Not a programmer or anything. I'm from the infrastructure side. I was studying like जो हमारे जो IT खरीदते हैं ना, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़
पाँच करो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आप लोग उसमें से एडवाइस कर देते क्या खरीदना क्या नहीं अभी बना रही हो ना जॉब very important but my data one my algorithm प्रॉब्लम है यू शुड गो एवरीथिंग एंड सेटल डाउन इन इंडिया that's what I've done I've been everywhere in North okay come back now okay enough darling इधर आए किसी को मार क्या किसका टाइम बस है ये recent okay come back to this now पागल आदमी है भाई डाला क्या आदमी है भाई का वर्ड okay so what do you find the current flowing through the arms A B C D भाई का वर्ड है find the current कंटिन्यू क्लास चल रहा है किसको समझा एक काम के लिए मांगूंगा सुधर जा अभी चलो अभी पढ़ाई नेक्स्ट पढ़ाई ना हाँ तो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है चलो ये सॉल्व करो ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन है करो इसको अभी व्हाट इज IAB Sir, I got the answer, sir. Sir, I first will have to calculate the resistance in AB and AC. no what is IAB IAB is this much so this is how much 1.5 ये होगा ना is IAB this much IAB is voltage is same 1.5 okay enough of time pass get right now what is IAB वैसे नहीं आएगा मेरे एक बार में नीचे जाके जितना बोल रहा हूँ ना उतना चुपचाप फॉलो कर okay next what is AC is this correct आयुष देखो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है AB में इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है ना ओम्स लॉ लगाओ तो आ गया 1.5 डिवाइड बाय 12 ये होगा सेम फॉर अदर नहीं अब इसमें देखो क्या आएगा व्हाट इज AC कहाँ पे है AC मतलब AC और ये वाला एक ही है ये एक ही करंट है AC से CDE दोनों सेम है सो IAC is same as CDE how much would that be so second IAC is equal to ICDE is equal to how much इसमें भी सेम वोल्टेज है so V by it will be 6 plus 4
So this is 0. This is 1.5. Okay, look at question now. 1.5 divided by 10. 0.15 ampere. Correct? So this is current from A to B. How much is the current? 1.5 by 12 ampere. And this current is 0.15 ampere. ठीक है? ये दो करंट हो गए. अब आगे क्या निकालना है? Okay. Potential difference V. AB across AB is same 1.5 क्योंकि parallel connection. This is appearing across AB. So across AB is VAB is equal to 1.5 volt. And then you have to find what is VCD. VCD is जो भी करंट जा रहा है 0.15 into 6 ohm. Ohm's law. By Ohm's law क्या होगा? VCD IR. So 0.15 into 6 and VDE will be 0.15 into 4. तो ये कितना हो गया? This will be 0.9 and this will be 0.6. So correct है. 0.9 plus 0.6 gives you 1.5. Hello, what's going on? Focus here now. This is a question that you should pay attention to. So this is a parallel connection. So voltage between AB will be same. Voltage between C also will be same, and this will be equal to 1.5. Now this 1.5 is split into CD and D. वही हुआ है, split होके total दोनों का same ही आ रहा है. कितना आ रहा है? 1.5. सर आपने वो VDE में क्या लिखा है सर? 0.15 into 4. 4 ओम है ना ये? हाँ. तो 0.15 into 4 कितना हुआ? 0.6. ठीक है? तो समझ में आ गया? Okay, so the questions are you have to analyze, read it twice, then you'll get the clue how to solve it. Okay, just read it twice. Only thing to be remembered is this is a parallel connection. In parallel connection, potential difference in the branches will be same. यहाँ से यहाँ 1.5 होगा और यहाँ से यहाँ भी 1.5 होगा. Okay, is that clear? आंसर दिया क्या इसका? देखो आंसर दिया कहीं पे? आंसर चेक कर लेना जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं. Then we have question 21. Anybody has doubt in this question? Question 21. What do you have? A 40-watt lamp requires. Let's say 60-watt lamp requires. So you have a 40. What is the line code? 200. I'm not sure whether this question is correct. यहाँ पे उसने 200 वोल्ट कर दिया है. यहाँ पे है 220.
This is 40 watt. जो 60 watt रखता है Okay, then what is how many ampere of current will go through this line? So what can you find out from the given data? What it says is this lamp will draw 0.272 ampere when connected to a 200 volt supply. ठीक है, और ये जो 40 watt वाला बल्ब है, it draws 0.182 ampere when connected to 220 volt supply. So if you assume that this question is correct, ठीक है, तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो? वोल्टेज और करंट दिया है तो तुम निकाल सकते हो R. ठीक है, क्या निकाल सकते हो? R. और इससे क्या निकाल सकते हो? इससे भी R निकाल सकते हो. तो ये R1 और R2 निकल जाएगा इससे. ठीक है, तो एक बार R1 और R2 निकल गया, then you have to calculate what is I1 and what is I2. Understood the logic? तो ये करना. या पावर यूज नहीं भी किया तो भी you can just find out R1 R2 separately and then calculate I1 R2 using this as V. ये वाले को V यूज. ठीक है, समझ आ गया है ना? तो V दोनों में सेम है. ठीक है, तो पहले R1 R2 के लिए ये डेटा यूज करो, बाद में V यूज करके I1 I2 निकालो सब. R1 क्या आएगा? E by I. कौन सा I? ये वाला I, given I. You get 220 divided by 0.182. There are long calculations in this section. ये आ गया इतना. फिर तुम्हारा R2 क्या होगा? R2 में V by I में क्या आएगा? 200. Assuming this is not a typing error. 272. इतना आएगा. फिर तुम्हारा I1 क्या हो जाएगा? I1 में ये वाला भी यूज करना पड़ेगा. Let's call this as V dash. So I1 will be V dash divided by R1. Because resistance will not change. This data is given so that you calculate the resistance of the bulbs. Resistance is not going to change. It is fixed for a given load, right? Next, what is I2? B dash by R2. What is B dash? 220. Okay? So this question is half done. Something 1208.7. Oh, ठीक है, जो भी है calculate. I have just given you the logical steps. So this is what you have to do. We'll verify the answer in the next class.